Yeah, so first of all, just sharing the context, तो अब तो हमने ये discuss किया कि there are few problems in this world which we generally manufacture ourselves and then solve. The scientists and हमने example लिया COVID का, how it was created from a Wuhan lab, and then इतने सारे लोग, इतने सारे hackers create हुआ, इतना सारा economy down हुआ, and all these things, मतलब लास्ट 2 साल लोग ग्रेजुएट मतलब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, मतलब जस्ट बिकॉज वन पर्सन और किस एक कंट्री के कुछ हिडन मोटिव्स की वजह से, बिकॉज दे हैव सम हिडन एजेंडास बिहाइंड इट, द होल वर्ल्ड वाज सफरिंग, राइट? एंड सिमिलरली वी सॉ दैट हाउ शैम्पू वाला जो चीज है वो होक्स है, and I can share that video as well to you after this thing. We can share that. So just to and ऐसे बहुत सारे examples है which you can take. And but what we are trying to understand is कि as an intelligent person you should understand कि ठीक है what is the real picture behind the things as we see, because जो marketing में आपको ads दिखते हैं YouTube पे या फिर Instagram पे या फिर टीवी पे तो कोई ad नहीं देखता आजकल, but Instagram YouTube पे जो आपको ads दिखते हैं that is not एक्चुअली मतलब जिस तरीके से आपको मतलब जोमेटो का जो ऐड आता है या फिर मतलब इट्स डिजाइंड इन दैट वे टू क्रिएट दैट नीड और अर्ज, और जबरदस्ती एक प्रॉब्लम क्रिएशन है, प्रॉब्लम नहीं भी होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएशन है कि ठीक है मतलब आप डिओड्रेंट नहीं लगाओगे या फिर एक्सपाइजी चीज नहीं लगाओगे तो आप बाकी सोसाइटी के सामने कैसे जाओगे, जबरदस्ती का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, राइट? एंड उसके बाद फिर ठीक है आपको उनका प्रोडक्ट लेना है। तो ये तो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स है, बट हम कुछ रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे विच इज एग्जिस्टिंग फॉर ऑल। एंड उसके बारे में बात करने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि ठीक है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच हैपेंस इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम सुनामी टू डेथ, डिजीज, एंड ये सारी चीजें क्या होती है। मतलब गौतम बुद्धा का हम एग्जाम्पल लेंगे कि हाउ ही फर्स्ट टाइम ही वेंट अहेड फ्रॉम हिज महल, और उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखा which were real world problems, and then he became, because he was Siddharth before and he became Gautam Buddha after that, and why was that a transformation? So we'll understand about that, and वो सारी चीजों को हम देख रहे होंगे प्रेजेंटेशन के थ्रू, और उसके बाद हम लोग लास्ट में समझेंगे कि what is the solution that Vedic scriptures provide us. So there are some solutions which science provides us, but which are more or less patch up solutions a lot of time. But how Vedic scriptures or Gita or Srimad Bhagavatam and Vedas answer these questions of what are the real world problems and how do we solve that out? Okay, so before that, anyone remembers कि हमने अब तक क्या discuss किया था last 3 session में, because ये चौथा session है, this is not the first session. Anyone remembers what we discussed? Okay, so this topic for today is discover lasting solutions. How do you put a full stop to all the sufferings that you see around in the world, right? And we'll try to first understand कि ठीक है problem statement क्या है, what is the problem statement that we are up about, and what is the solutions to those problems that we'll understand in the later part of the presentation. Okay, so first of all, as we saw, right, ki modern science, this is a gist and we'll understand in detail with facts and figures, but yeah, modern science offers stopgap solutions or a patch up solutions to a lot of problems which we see there, and but it cannot put a full stop to all the problems in life, and Vedic wisdom offers a perfect spiritual solutions that put a full stop to all the problems of life. So this is the summary of the summum and bonum of the whole session, but हम इसको practically one by one लेके discuss करेंगे. So discover lasting solutions, right? So put a full stop to all the suffering. So अगर मैं आपसे पूछूं कि what are the real problems of life? So what you'll say? What are the real world problems in life? जो आपको दिखती है कि मतलब this is real problems, और उसका मतलब उसका so basically हम लोग real world problems एक तो पहले definition समझेंगे कि पहले real world problems होते क्या हैं, right? And then we'll understand कि ठीक है what are those real world problems. So जैसे कि one of the okay, so this is the index, हम लोग मतलब real world problem discuss करेंगे, फिर temporary solution discuss करेंगे, which is given by science, technology and medicine, and we'll also discuss permanent solution which is given in the Vedic wisdom. So this is the index. Okay, or yeah, so we were discussing what are the problems in your life, right? तो कोई बताएगा chat पे what are problems in life generally? What do you think are problems in life? First of all, ठीक है, real problems छोड़ो, but what are the problems in life generally which you think?
I'm not able to open the chat also. नितिन ने लिखा है diseases. Diseases, okay. Or Food insecurity, death, okay, food insecurity, death. Wow, good. Or भी लिखा है poverty. poverty, okay. और Mental health लिखा है, social में. सब लोग को एटलीस्ट एक प्रॉब्लम लिखना है जो लगता है कि प्रॉब्लम है, या तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में ना हो लेकिन आपने अराउंड भी देखा हो तो भी चलेगा. अंश ने लिखा है depression. ओके ओके, डिप्रेशन, ठीक है. सो राइट, सो काफी अच्छा बताया काफी लोगों ने, पॉवर्टी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. और डेथ भी बोला किसी ने डिजीज भी बोला, राइट. सो व्हाट इज रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम इज, कोई बोलेगा मतलब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है कि देयर इज नो गर्लफ्रेंड और कोई बोलेगा कि ठीक है फेल्ड इन एग्जाम, और आई एम नॉट हैंडसम, आई डोंट लुक गुड, I don't have money, that could be a problem for someone. Family problem है, या फिर job नहीं है, या फिर physics सही नहीं है मेरा, I don't look good. So all this could be some problems which people would say, but what is real problem, right? मतलब ये सारी problems है लेकिन आपको है, maybe पूरी दुनिया को नहीं है, right? और आपको है, but it could be also कि ठीक है, the way अगर आप change करोगे उसको देखने का, a lot of problems would be gone. But there are some real problems which exist in this world, right? A problem can be considered a real problem if it fulfills the following three criteria. First, it is common to all. मतलब we are talking about real problems, ठीक है, जो it is IIT crack नहीं हुआ, अच्छा. Okay, so yeah, so it is common to all. That is the first criteria of having a real world problem. Then nobody wants it. किसी को नहीं चाहिए प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम है लेकिन किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, मतलब किसी को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है. वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए और सबको नहीं चाहिए होना चाहिए, राइट. एंड द थर्ड इज नोबडी कैन अवॉइड इट. नोबडी कैन अवॉइड इट मतलब दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, राइट. बेसिकली ऐसा कोई इस मीटिंग में नहीं होगा जो बोलेगा कि यार ठीक है मेरे को आज तक कोई डिजीज नहीं हुआ, राइट. Is there anyone जो बोल सकता है कि I don't have any disease till now? Right? Nobody can say that, right? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी तरीके से everyone has some disease or some or the other way, right? So real world problem, ठीक है, मतलब ये मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है या फिजिक्स सही नहीं है, ये नहीं है वो, that is personal to you and it could be आप थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अपने आप को देखोगे कि भाई ठीक है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, एंड कुछ कुछ चीजें का अगर आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा. लेट्स से मतलब कोई ब्लैक पर्सन है और उसको लग रहा होगा कि ठीक है आई एम ब्लैक एंड आई डोंट लुक गुड एंड एवरीथिंग, बट दूसरा ब्लैक पर्सन होगा और लेट्स से मतलब देयर आर सम ब्लैक हीरोज आल्सो इन द हॉलीवुड and they don't think themselves like that, right? So basically it's the way to look at something, but that is personal. But real world problems are those problems which is common to all, nobody wants it and nobody can avoid it. So what are these four types of problem, so there are four real problems which we have, and we'll understand about that, which have these three criteria in them. Okay. So कुछ कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एक तो डिजीज किसी ने बताया, किसने बताया डिजीज? किसने बोला डिजीज? Poverty and disease. Right. So right, disease is a one good example which is common to all, nobody wants it and nobody can avoid it. मतलब आप कितना भी अवॉइड करो वो आएगा ही आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हो कि ठीक है अभी मेरे को कोई डिजीज नहीं आएगा, राइट. सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो क्या नाम है उसका, the greatest dancer of मतलब जो बोला Michael Jackson, right? So Michael Jackson was like कि I want to live for 100 or 150 years,
And then what he did is कि उसने पूरा उसके हिसाब से पूरा अपने घर पे पूरा सारी चीजें कर दी facilities. He had all the doctors available to him just on a phone ring. Like they were staying at his home. He had organ donors living there. He had मतलब 4-5-6 doctors थे and everything. मतलब आप देख भी सकते हो over the internet about that. So he had all the things because he had planned कि देखो मेरे को कैसे भी करके मेरे पास इतना पैसा है, मेरे को अभी 150 years जीना ही जीना है, मतलब no matter what. But what happened? Anyone knows how much age was he when he died? कोई है यहाँ पे या फिर मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? Anyone? गूगल करके फटाफट बता सकते हो? 50 साल. Right? बेचारा 1/3 जिया जितना वो चाह रहा था. Right? But even after having all the money in the world, even after having the best doctors, organ donors, just at the disposable, मतलब इससे ज़्यादा तो यार मतलब गांव में लोग जीते हैं without or having doctors and having all these things, right? So basically, but it is unavoidable. He cannot avoid it. आनी है death तो आएगी, और disease आना है तो disease आएगा. That is unavoidable, right? So this kind of problems which we are talking about here, right? So 4 real problems: birth, old age, disease, and death. So these are the 4 real problems which we have in this world, and this follows the criteria which we discussed. It is common for all. Nobody, you cannot avoid it, and nobody wants it, right? And इसमें आप देखोगे कि disease आपने बता दिया, death बता दिया. Old age is also considered one of the real problems, and birth कैसे है वो हम एक बार डिस्कस करेंगे कि लोगों को लगा है birth कैसे प्रॉब्लम है, right? What we will discuss. So one can perceive birth, death, old age, and disease as real world problems in this knowledge, Bhagavad Gita. 13.8 से लेके 12 तक अगर पढ़ोगे तो इसके बारे में लिखा है कि these are the 4 real world problems, right? And how birth is a problem, we'll see that. एक सेकंड मैं full screen share करता हूँ वापस से. So how birth is a problem, we'll see a video and we'll understand. So this is the मतलब inside the womb you have this picture. So उसका है कि how 5 months के बाद a baby feels. He feels hunger and thirst. Like basically you just understand that for 9 months the human fetus lies cramped within the darkness of the womb, scorched by the mother's gastric fires and jolted by the sudden movements in a congested womb. And so basically आप ऐसे समझो कि आपको एक गोनी में भर दिया है और आपको वहां पे आजू बाजू पूरा एकदम मतलब आग लगी हुई है और एकदम ऐसे बहुत ज्यादा हीट है, एंड आजू बाजू बहुत सारे हंग्री वॉर्म्स हैं जो आपके आजू बाजू में है. बट दिस इज एंड इसलिए बच्चा रोता है ना, मतलब जैसे वो पैदा होता है, व्हाई डज ही क्राइज? दिस इज द रीजन व्हाई ही क्राइज, बिकॉज इट वाज अ हॉरिबल सिचुएशन टू बी इन, एंड द चाइल्ड पासेस स्टूल एंड यूरिन इन द सेम पॉकेट. मतलब उसी में मतलब समझ लो कि कैसे कैसे मतलब ऐसा आप एक गोनी में उसी में आपको निकल ही नहीं सकते आप 9 महीने के लिए, और आपके बाजू में इतना हीट है, आपको हंग्री वॉर्म्स खाने के लिए दौड़ रहे हैं एंड एवरीथिंग, राइट? एंड थोड़ा सा वीडियो sorry.
और अगर कोई मतलब अगर वो मतलब प्रेग्नेंट वुमन भाग रही है, अगर वो कुछ मतलब ज्यादा तीखा खा रही है, बिटर खा रही है, एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स दैट चाइल्ड इनसाइड. Right, so basically why we discuss it कि ठीक है मतलब these are real world के problems के classification में birth also comes in, right? And like lot of people might not know about this, so that is why I discussed कि ठीक है मतलब ये this is written in Bhagavad Gita कि there are 4 kind of problems in this world. I'll just share the verse also just for the reference. ये आप लोगों को पता रहे कि ठीक है, I'm just not just speaking like that. So this is Bhagavad Gita 13, chapter 13, 8 to 12 verse. And here it is written. हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषो न सुरद दोष दुर्शनम. So basically यहाँ पे उसका लिखा हुआ है the perception of evil birth, death and old age and disease is also मतलब it is I declare this is also a problem. मतलब ये पूरा वर्स पढ़ेंगे तो हम थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, but basically this 4 are real world problems in this world that is mentioned, right? And that is, and first one is the birth one, then is old age, right? जैसे कि मतलब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई कितना भी चाहे कितना भी कॉस्मेटिक लगाए, कितना भी लॉरियल के प्रोडक्ट्स यूज करे, कितना भी कुछ भी कर ले, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल टर्न फ्रॉम दिस टू दिस, whether it is Aishwarya Rai or whether it is anyone for that matter, one has to turn from this to this, and one cannot मतलब कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी फेस सर्जरी कर ले, कितना भी whatever he can do, but he cannot change this, right? And that classifies as one of the problem, one of the criteria which we saw, right? So Arnold, right? मतलब he was the best bodybuilder, but now how मतलब फिर भी maintain किया, but how is he right now, right? So after a point of time, you have to become old, and you will become from this to this. We want to remain young forever, but very soon we'll start growing old, and our bodies become weak and frail. All right. No one wants to get old. Cosmetic industry is flourishing due to the fear of old age, right? मतलब जबरदस्ती का छोटी-छोटी चीजें, छोटे-छोटे प्रोडक्ट स्कार्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, all those things मतलब पिंपल्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, मतलब हजारों चीजें बनाई है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में. Because and why this cosmetic industry is booming? Because everyone, no one wants to become look old. सबको young दिखना है, and that is why the whole industry is booming, and the whole industry is काफी अच्छा कमा रहा है, because no one wants to become old, no one wants to look old, right? Or Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day.
Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. Right. So basically, the takeaway here is कि यार after a point of time कितना भी सोचो, time destroys everything, right? But the thing is कि आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि last 20 साल कैसे गए, और last 20 साल थोड़ा याद भी रहेगा because there were new learnings and new things happening. अगर आप last 5 साल को अपने reflect करोगे, how the last 5 years went, just go back 5 years back, like 2022 में हो भी हो, let's go to 2017 and just reflect कि 2017 से लेके 2022 तक कैसे कितना जल्दी गया. What would you say? कितना जल्दी गया? How was it like the last 5 years? Because generally क्या होता है ना, time is very, मतलब I was looking at documentary, so इसमें time का ये होता है कि the more experiences you get, the उतना ज़्यादा लगता है आपको कि time है. क्योंकि बचपन से लेके क्या होता है कि आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं, आप बहुत मतलब न्यू पर्सपेक्टिव्स और न्यू लर्निंग्स होती हैं, तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है. बट एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, टाइम आपको लगता है कि और जल्दी गया, और जल्दी गया, और जल्दी गया. दैट इज द नेचर ऑफ टाइम, राइट? सो कोविड की वजह से तो छोड़ ही दो, मतलब हाउ टाइम वेंट. बट या जस्ट अगर आप देखोगे, रिफ्लेक्ट करोगे लास्ट 5 years, 4 years, 3 years, इट जस्ट वेंट लाइक अ मूवमेंट, लाइक फटाफट चले गया, राइट? एंड सिमिलरली द नेक्स्ट 25-40 years भी चले जाएंगे, एंड one day we have this problem or this real problem of old age would come, and at that age a lot of things you cannot do which you are able to do right now, right? So this is one of the problem. Then this is disease, jaise Nitin ne bataya, right, ki disease is also a problem. No matter what, how much fit you are, you would get disease. मतलब some diseases are like that, क्या ठीक है किसी ने कुछ किया भी नहीं बट हो गया वो बस just as it, right? So और या फिर किसी और के वजह से वो डिजीज हो गया, कोविड भी हो गया जैसे कि अगर देखोगे तो फिर क्या किसी ने someone came in contact with me and the COVID started, right? So diseases bound to happen. अगर आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो बढ़िया फिट था, लेकिन फिट इंसान को कुछ ना कुछ अचानक से कोई कैंसर हो जाता है या कोई अचानक से कोई डिजीज हो जाता है. एंड आई नो इन माय पर्सनल नेटवर्क आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी यंग and have such diseases or such ailments which is uncurable, and they are very young. And मतलब कुछ लोग हैं, मतलब जो मतलब you all also might know, but I won't name them, but yeah, there are few people like that which I know in my personal network. So basically बोलने का मतलब ये है कि ठीक है, disease is also bound to happen and everyone would suffer that. So birth and हमने discuss किया birth, and उसके बाद हमने डिस्कस किया ओल्ड एज, एंड हमने डिस्कस किया डिजीज, राइट? वी वांट ऑलवेज टू रिमेन हेल्दी, बट मच अगेंस्ट आवर विश वी एनकाउंटर वेरियस डिजीजेस, राइट? एंड द फोर्थ प्रॉब्लम व्हिच वी ऑल फेस इज डेथ, राइट? एंड इट इज written in Garud Puran, Uttarkand, Aditya Shaka, that indeed, O Garuda, when the hour of death approaches, then by the glance a certain disease raises up its head. The organs grow weak and troubles start showing a power as if all of a sudden a millions of scorpions have stung the person. So basically, गरुड़ पुराण में इस तरीके से लिखा है कि उतना पेन होता है as if at a certain and at a single moment millions of scorpions are biting you or stinging you.
that is the pain which you have at the death. So basically, this 4 problems which we see: death, old age, birth, and disease. This is common to all. Nobody can avoid it, and it is bound to come today or tomorrow to every one of us, right? But generally, we don't, care about it. कि ठीक है, चलेगा, होगा ही, देखे जाएगा, right? But we can take some precautionary. So basically, this is just trying to, reinstate here that there are some problems in this world which, is beyond our control. But how does science and technology tries to solve it, and how does Vedic scriptures tries to have a perspective on it? So वो हम डिस्कस कर रहे होंगे. So हम अभी बस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे या प्रॉब्लम है कि नहीं, मतलब काफी लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है. तो नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट, एंड अगर ये 4 चीजें नहीं भी होंगी तो आपको ये 3 चीजें तो पक्का होंगी, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट? एंड नहीं, ये 4 चीजें तो होंगी, लेकिन आपको लगेगा कि ठीक है यार, अभी नहीं हो रही ना, अभी डेथ नहीं आ रहा, या फिर अभी डिजीज नहीं हो रहा, या फिर अभी ओल्ड एज तो नहीं आ रहा, तो व्हाई शुड आई केयर अबाउट इट? सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच एग्जिस्ट इवन टुडे फॉर एवरी वन ऑफ अस. तो वो हम डिस्कस करेंगे. So in that disease condition, the dying person eyes bulges due to the pressure of the air form within, and his glands become congested with the mucus, and he has difficulty in breathing, and there is a rattling sound within his throat. Thus he dies most pathetically. So this is this is a description of how a death happens for a person according to Srimad Bhagavatam. So apart from these 4 things, we also have threefold miseries that everyone has to go through. So अगर आप देखोगे कि हेडेक होता है, right? That is due to your mind on your body, right? किसी ने बोला होगा, या तो किसी ने स्ट्रेस बोला था, यहाँ पे डिप्रेशन बोला था, right? All these things are due to your own self. मतलब if you control yourself, you can go away with it. Body pains, suicidal thoughts, all these things is in your control, and this pain or this suffering is happening just because of yourself, right? And then there are some things which happens not because of you, but because of some other XYZ person or some third party person, right? Which can be insect bite, which can be some argument or fights with a person, which could be bacteria or viral disease like a COVID, which could be animals attacking you. मतलब आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन आपको अटैक कर रहा है. मतलब कुछ चीजें हैं जो आप अपने हिसाब से आपके कंट्रोल में है डायरेक्टली, जो आपके माइंड और बॉडी की वजह से होता है, ये सारी चीजें. देन देयर आर सम थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ अदर पर्सन, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. किसी ने आके आपको ठोक दिया, रास्ते में आप जा रहे थे बढ़िया से, राइट? तो आप एक्सीडेंट हो गया, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज. And then there is let's say theft and robbery हो गया, right? आपने कुछ नहीं किया, आप अच्छे इंसान हो, but फिर भी आपके साथ बुरा हो गया, right? This is because of other living entities. Then there are so this is just the classification of miseries due to your mind and body, due to your living entities, other living entities, and due to natural disasters. और कुछ चीजें हैं like tsunamis, earthquake, floods. जैसे नेपाल में आया था earthquake, right? फ्लड्स, जैसे मुंबई में मैंने एक्सपीरियंस किया था, और भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जो यहाँ पे कॉल पे होंगे कहीं ना कहीं किसी तरीके से. टोर्नाडोज, ड्रॉट्स happens in villages and everything, right? So all these things also happen in the real world, right? And this is not because of any third person also. This is just because कि ठीक है, natural disaster हो गया, and that is beyond our control, right? And we classify these 3 things as आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, एंड आदि दैविक कलेश. सो बेसिक आध्यात्मिक मतलब मिजरीज ड्यू टू योर ओन माइंड एंड बॉडी. आदि भौतिक मतलब किसी और की वजह से, और आदि दैविक मतलब किसी डेमीगॉड्स की वजह से हुआ हो, मतलब किसी देवता ने किया हो, राइट? मिजरीज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स व्हिच इज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? सो बोलने का मतलब ये है कि इवन आफ्टर लेट्स से कि वो 4 चीजें जो हमने डिस्कस की, रियल प्रॉब्लम्स व्हिच इज डेथ, ओल्ड एज एंड बर्थ एंड डिजीज, इफ दैट इज समथिंग व्हिच यू थिंक ठीक है अभी नहीं होगा, या फिर लेकिन दैट इज बाउंड टू हैपन, एंड दिस आर द 4 थिंग्स which is going to come no matter what. But let's say उसको एक वो प्रॉब्लम है, and then there is this 3 problems also, like miseries due to your mind and body, living entities and natural disasters. So we are just अभी भी हम लोग उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं. हम अभी फिर देखेंगे साइंस क्या दे रहा है सोल्यूशन, और वैदिक
क्या दे रहा है सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, so आध्यात्मिक कलेश, misery due to your own mind and body. So in India, let's say, teen suicides rates have tripled in the past 25 years. So this is so basically more advancement coming into the picture, more internet, more better things coming into the picture. The problems is getting more worse. आपको क्या लगता है कि why this is happening? यहाँ पे लिखा भी है वैसे causes: academic pressures, lack of family support and stress. But what do you think is the core reason for this? Anyone in the chat? Ki we are becoming more modern, we are becoming more better day by day, but still all these things are happening. Why do you think that? सब लोग हैं यहाँ पे? Okay, so there are आदि भौतिक कलेश, misery is happening because of other living entities. कहीं पे terrorist attack हो गया, आपने कुछ नहीं किया था, मतलब let's say 26/11 था, अब बढ़िया से ताज होटल में बैठे थे, आपको अचानक से किसी ने पीछे से शूट कर दिया, खत्म। अब आपकी उसकी में कोई गलती नहीं थी, और हम उसको अलग एंगल से भी देख सकते हैं कि वैसा क्यों होता है, why do bad happen to the good people. That also we'll discuss in one of our session, जो I think 6th or 7th session होगा. Why do bad things happen to good people? Why is that the case? तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट हियर द पॉइंट इज कि देयर आर मिजरीज हैपनिंग टू अदर पीपल आल्सो, टेररिस्ट अटैक्स, और समवन जस्ट आपको सीधा, आप चल रहे थे साइकिल से, अचानक से पीछे ठोक दिया और खत्म, राइट। मस्कीटो बाइट से आपको मलेरिया हो गया और खत्म, या फिर आपको किसी ने, जानवर ने अटैक कर दिया, या किसी ने आपको थेफ्ट कर दिया और चोरी चोरी में आपका गला काट दिया. All these things happen generally, right? So this is Adi Bhautik Kalesh, which is categorized as. And then there is Adi Devik Kalesh also happening, which every one of us might have seen a lot of pictures. कि कहीं पे कुछ earthquake आएगा, कहीं पे कुछ tsunami आ गया, कहीं पे कुछ और चीजें हो गई, कहीं पे drought आ गया and everything, right? So I'll just skip this video. So basically there is a story, right, कि जैसे कि लॉर्ड गौतम बुद्ध जब थे, तो पहले he was सिद्धार्थ, right, and he was a son of a king, he was a prince basically, and वो कभी बाहर नहीं निकले अपने राज्य से, मतलब अपने महल से इनफैक्ट कभी बाहर नहीं निकले until the age of I think 18 or something. So he never went outside his महल, right, and he was there inside a cozy living place. और उनके मम्मी पापा ने या उनके फैमिली ने या प्रजा ने कभी भी उनको पता नहीं लगने दिया कि all these 4 problems also exist: death, birth, old age and disease. So पहली बार वो घर से, मतलब महल से बाहर निकले अपने रथ पे, and he saw a person, right, जहाँ पे that person is having, मतलब he's coughing and he's मतलब बहुत ज्यादा उसको पेन हो रहा है, and he saw that person. तो उसने पूछा ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज उन्होंने उसके पहले कभी देखा ही नहीं था कोई डिजीज, ना उनके फैमिली में ना कहीं पे. तो इंसान ने बताया कि ठीक है ये डिजीज है, उनको ये XYZ चीज हुई है, राइट. देन ही वेंट अहेड एंड समवन इज, कुछ लोग हैं जो मतलब राम नाम सत्य बोल रहे हैं, और मतलब उस टाइम पे कुछ और बोल रहे होंगे, बट बोल रहे हैं, और पूरा एक साथ में ग्रुप जा रहा है, और एक मतलब एक वाइट कलर का पूरा लिया हुआ है किसी ने, राइट. तो उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, और उसमें एक बॉडी दिखा उनको कि एक इंसान लेटा हुआ है. तो बोल रहा है कि ऐसा क्यों लेटा हुआ है उसके ऊपर, इनको ये सारे लोग लेके क्यों जा रहे हैं, राइट. देन एवरीवन टोल्ड हिम कि ठीक है, नाउ ही हैज डाइड, द सोल हैज लेफ्ट द बॉडी. तो उनको लगा कि उनके लिए एक शॉकिंग था, मतलब कि बिकॉज ही हैज नेवर सॉ कि ठीक है एक बंदा मर गया का मतलब क्या होता है, राइट. एंड डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, एंड उन्होंने देखा कि ओल्ड पीपल हैं अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्ट्रीट्स,
है ना, मतलब क्योंकि उनको कभी दिखाए, अगर आप पूरा मूवी है उस गौतम बुद्धा का एनिमेटेड, तो आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से पूरा इलस्ट्रेटेड है। एंड उसके बाद उन्होंने किसी ओल्ड लोगों को देखा कि यार दे आर हैविंग सो मच प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग और डूइंग सम बेसिक स्टफ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर हिम एंड दैट गेव हिम अ रियलाइजेशन कि ठीक है, लाइफ में मतलब बहुत और चीजें जो मुझे नहीं पता है, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड। मतलब ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज होता है, बट व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवन, मतलब हमें नहीं चाहिए वो। नो वन इन दिस रूम जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, नो वन वुड वांट ऑल एनी डिजीज और एनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, but still it happens and it is bound to come and you cannot ignore it also. So why it is happening in the first place? That was the question that he asked about कि ठीक है, I want answers to this question. Why are these problems happening in this life? Why can not be a life without these problems? Why cannot be I always be happy as I was in the last 15-20 years? जब वो महल में थे उनको एक भी प्रॉब्लम नहीं आने दिया उनके लाइफ में, उनके फैमिली वालों ने, बट उन्होंने बाहर जाके देखा कि दिस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, बट दो एक पॉइंट के बाद मुझे भी डिजीज होगा और मुझे भी, मेरा भी डेथ होगा। एंड बिफोर दैट हैपेंस आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, व्हाई इट हैपेंस, and how can I put a full stop to all these problems or all these sufferings? Is there a way to do that? And that is what led him to become meditate at a banyan tree, and unhone fir meditate kiya and then he got some answers and everything. But the starting point was he saw those problems and then he reflected किया ठीक है मैं सोचता हूँ, he thought about it because he was an intelligent person. और बाकी बहुत लोग होंगे जो लोग ये सब देख के भी ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि यार ठीक है इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अ इंटेलिजेंट मैन, अगर आपको लेट्स सपोज कोई भी चीज हुई तो आप उसको नेक्स्ट टाइम अवॉइड करने का ट्राई करोगे ना, बार बार सेम चीज थोड़ी ना करोगे। अगर आपको लेट्स सपोज किसी तरीके से कोल्ड हो गया तो आप ठंडा पानी बंद करोगे पीने का, राइट? तो सिमिलरली इफ दिस प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, then you would try in some or the other way to kind of overcome or get away with all these problems. And is there a solution to that? That is what he went in search of enlightenment and everything, right? And wo pura philosophy hai, right? So basically everyone wants unlimited happiness but zero suffering, but still suffering is bound to come and it would happen. So how do we make sense of it? We'll understand in the third part. अभी हम लोग ये समझते हैं कि ठीक है ये सारी चीजें होती हैं, तो व्हाट साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन गिव्स सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स, राइट? एंड हाउ इट इज ट्राइंग टू गेट अवे। सो अगर आप देखोगे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, द summum and bonum or the goal of science and technology क्या है? What do you think? According to every one of you, what do you think is the objective or the goal of science, basically, at the end of the day? You can write it in the chat. Thanking for happiness at the end of the day. So why does Shah Rukh Khan's child need a drug to do that? Because ठीक है उनको लगता है कि ठीक है अभी तो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जो एक नॉर्मल बंदे को चाहिए होता है वो सारी चीजें हैं। उनको क्या लगता है ना कि नॉर्मल वाले बंदे को लगता है, जो गरीब इंसान है उनको लगता है कि ठीक है हमारे पास इतना हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके पास वो ऑलरेडी था पहले से ही, तो उसको अभी खुशी मिलेगी नहीं क्योंकि अभी कुछ इंक्रीज हुआ नहीं, उसके पास तो ऑलरेडी है वो सारी चीजें। तो और कैसे खुशी मिलेगी, और कैसे खुशी मिलेगी? तो एवरीवन वांट्स अनलिमिटेड हैप्पीनेस, कि ठीक है जितना है उतना कम है, एंड दैट इज द ग्रीड कि ठीक है मतलब कुछ भी करके मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बट दैट हैंकरिंग कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, and that is why people lead to such things like drugs, LSDs and everything, because they want something higher and something higher and something higher. मतलब ठीक है अभी मैंने आई हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स, उनको लगता है कि लोगों को गर्लफ्रेंड्स होंगे तो खुशी मिलेगी, तो उसके पास तो ऑलरेडी मतलब शाहरुख खान का बेटा है तो फिर ही विल हैव सो मेनी ऑलरेडी, राइट? सो ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसको मतलब कोई आर्टिकल चाहिए, कोई आइटम चाहिए, ही हैज इट ऑल। तो बेसिकली लोगों को और ज्यादा चाहिए, राइट? हैप्पीनेस इन सम और द अदर वे, एंड दे थिंक लाइक कि ठीक है यार ड्रग्स is something higher and मुझे एक अलग state of mind मिलेगा, and that is the happiness which I won't get from any other things, and let me just take it.
right? So that is the major thing कि ठीक है, मतलब everyone wants happiness, but at the end of the day आप ये देखोगे कि मतलब people are leading मतलब not understanding the consequences after it, कि ठीक है वो आपको 2 मिनट का pleasure तो देगा एक अलग, but how much consequences it would have in your life. And you have already so many things which a normal person would want to have, but still you want this because ठीक है, मतलब मेरे को कुछ और चाहिए, कुछ अलग करना है ना, सबके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ हायर चाहिए. And that is the thing which everyone is after on towards at the end of the day. And मतलब बेसिकली अगर आप एडवांसमेंट को भी देखोगे टेक्नोलॉजी का कि ठीक है, मतलब वेयर आर वी हेडिंग, कि ठीक है ऑटोनोमस गाड़ी बनाना है, ठीक है, फिर एक पॉइंट के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगा, लेट्स सपोज, ठीक है, अभी ओपन जीपीटी आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, तो फिर ठीक है कंटेंट राइटर्स का काम खत्म एक लेवल तक, मतलब एटलीस्ट एवरेज वालों का तो काम खत्म, ठीक है. फिर धीरे धीरे करके ग्राफिक डिजाइनर्स का डाली बन चुका है, तो ग्राफिक डिजाइनर्स का भी एटलीस्ट जो मीडियोकर वाले ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनका काम खत्म एटलीस्ट, मतलब, और धीरे धीरे में वो प्रोडक्शन पे आ जाएगा. एंड देयर वुड बी ओनली फ्यू पीपल हु आर बेस्ट एट देयर वर्क ओनली रिमेनिंग फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब अगर मैं एवरेज कोडर का भी देखूँ ना, तो नेक्स्ट 5 years में ही विल बी गॉन, हिज जॉब विल बी गॉन. ओनली द पीपल हु आर वेरी अमेजिंग इन देयर इंडस्ट्री और at the top will remain, right? मतलब अगर आप देखो कि मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि यार 5 साल पहले कि यार ठीक है ऐसा कोई चैट जीपीटी जैसा कुछ हो जाएगा या डाली जैसा कुछ हो जाएगा. सो व्हाई आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज कि वी आर रीचिंग एट अ पॉइंट वेयर वी डोंट नो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और हम वहां पे जा इसलिए रहे हैं बिकॉज देयर इज कैपिटलिज्म एट प्ले. कि ठीक है, some people, only few people would want to become more and more and more and more rich, and because they have all the resources in the world, they are trying to control and become more and more rich, right? मतलब, and the gap between the rich and the poor is going to increase beyond control after a point, because ठीक है जिसके पास पैसा है वो और पैसा लगा के और ज्यादा businesses बना सकता है, but the poor is getting poorer because of the influence and everything. मतलब ये एक अलग ही टॉपिक है, हम कभी अलग से डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, बट द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम कहाँ जा रहे हैं. वी शुड ऑल एज अ होल सोसाइटी, एज अ सोसाइटी एज अ होल, we should question it. Are we on the right track towards things, or we are just taking science, technology and medicine and just going blindly anywhere? but ठीक है, सबको लाइफ को कंफर्ट करना है, बट कंफर्ट क्यों करना है? और लेट्स सपोज इतना कंफर्ट हो गया कि यार एलेक्सा आपके घर पे आप कुछ भी मंगाओ लेके आ रहा है, रोबोट लेके आ रहा है, और मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, आप सब घर बैठे बैठे हो गया, आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो गया कि आपको घर पे बैठे बैठे फ्री मनी मिल रही है, आप घर पे सोए हो बस दिन भर, आप AR VR लगा के मेटावर्स में घूम रहे हो यहाँ वहाँ पूरे वर्ल्ड में. इज दैट द वर्ल्ड विच यू आर लुकिंग फॉर, और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स एज अ साइंस? मतलब जो भी सारी चीजें कर रहे हैं हम, जो भी ऑन द नेम ऑफ एडवांसमेंट वी आर डूइंग, इट लुक्स फ्लैशी, but what do you think is the end goal, and is the end goal what we really want? मतलब हमने सोचा था कि ठीक है इंटरनेट से बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, और अच्छी चीजें हो भी रही हैं, no doubt about it, and we are having this session because of the internet also, but a lot of things are not happening good. And is anyone trying to control that, or is anyone concerned to control that? Is anyone trying to question कि यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या एडवांसमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? What is your perspective? Anyone? Or an intelligent person, we should try to question things on the fundamental level. कि ठीक है जो हमें ads में दिख रहा है बस वही हमें follow नहीं करना चाहिए, but rather we should question कि यार are we going in the right place? Are we, whatever advancement are we doing, is it happening for the right, or there are some repercussions to it? मतलब आप सोचो कि यार there is this Bangalore techie, मतलब अभी computer science पढ़ा होगा अगर techie है तो, and he lost his job and he kills his 2.5-year-old daughter as he had no money to feed her. And now he is a person who is well educated, well to do family से होगा, and he is killing a 2.5-year-old daughter. अपनी बेटी को कैसे मार सकता है वो इंसान, वो भी पढ़ा लिखा इंसान? Is it the education what we are looking out for? What do you think? अभी यूएस में अगर आप देखोगे, बंदा अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, जाके 6 लोगों को मार देता है वॉलमार्ट में. क्यों मारता है कुछ नहीं पता,
ऐसी बस मन कर रहा था मेरा. He has no reason, right? अगर आप गन डेथ्स का रिपोर्ट देखोगे फ्रॉम द यूएस, 45,000 people died just for gun related issues. इंडिया में एटलीस्ट वो कम है बिकॉज इंडिया में गन इतना इजीली नहीं मिलता है. दैट इज अ गुड पार्ट. बट 43% ऑफ इट इज मर्डर. मतलब बेसिकली आप समझो 45,000 में से 43% ऑफ इट इज मर्डर और 54% अपने आप को खुद मार देता है इस 45,000 में से. Is this the world which we are looking out for? Is it the advancement that we are looking out for? What the problem is कि हम यहाँ just top 1% या 0.1% के चीजें देखते हैं कि ठीक है मेटावर्स बन रहा है, AI बन रहा है, चैट जीपीटी बन रहा है, and we forget about the 99.99% of the world and what suffering is going on in the world, and that no one cares about because वो लोगों के पास पैसा ही नहीं है ऐड दिखाने के लिए. ऐड दिखाने का पैसा बस 0.01% लोगों के पास है, and that is why the whole havoc is created. And what we see is the perspective of that 0.01% of the world जो लोग दिखाना चाहते हैं because उनको अपना प्रोडक्ट और चीजें बेचनी है, right? So this is very important to understand as a rational person, because we should not become a blind follower of science or technology also. दोनों चीजों को rational के साथ यूज करना चाहिए या rationality के साथ देखना चाहिए, and that is what is very important as a spiritual person, right? And that spirituality offers you. Okay, so I think हमने 1 घंटा कर लिया, so I'll move very fast from here because I was not aware that time बहुत ज़्यादा हो गया. So although we are advanced in medical science and at least have the latest technology at our latest disposable, right? हमारे पास सारे meters हैं. We have doctors for each and every part of your body. For dermatologist to ENT के डॉक्टर्स होते हैं जो इस पार्ट में स्पेशलाइज करते हैं, आंखों के डॉक्टर होते हैं जो इस पार्ट में, हेड के डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं. There are so many doctors specializing. उन्होंने पूरी लाइफ और पूरा दे दिया, उन्होंने 10-10 साल प्रैक्टिस कर लिया just to specialize कि यार आपको एक सफरिंग एक पार्ट ऑफ बॉडी में और आप उसके ऊपर पूरा स्टडी कर रहे हो पूरी लाइफ सो दैट उसकी वो सफरिंग हटा पाओ. फिर भी आप उसके ऊपर एक टेम्पररी सोल्यूशन ही दे पाते हो, ऑब्वियसली बिकॉज देयर यू हैव लिमिटेशंस, राइट? दैट इज द स्टेट ऑफ साइंस एंड वी हैव लॉट वे टू गो. और हम और अच्छा कर रहे होंगे साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में, नो मैटर. एंड वी आर ऐसा नहीं कि वी आर अगेंस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Some things are happening for good. We are using this internet for a lot of things. Lot of people are getting cured. पहले से कुछ चीजें काफी अच्छी हैं, but काफी सारी चीजें अच्छी नहीं भी हैं, and we should talk about those things also, and we should be concerned about those things also, right? Although we are advanced in medical science, still our plans of good health and happiness are thwarted with newer and newer diseases. So this is the champion, the greatest, Muhammad Ali, right? And he was the best in the world. But this is he after Parkinson disease. He couldn't lift up a cup of coffee also after that point. So this will, बोलने का मतलब ये कि this will come to us one day, very soon. So we should be aware of it and we should plan accordingly, right? Why do we have even such great personality suffer from problems? Even after having this painkillers and all these things, can scientific advancement help us put a full stop to all the sufferings, or is it just giving us temporary solutions, stitching solutions? So आप देखोगे कि हमने फ्रिज बनाया, राइट? हमने फ्रिज बनाया कि ठीक है यार चीजें ठंडी रहेंगी, राइट? But we ended up creating CFC gases which is depleting the ozone layer. और आज ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया. मतलब एक नेचुरल सनस्क्रीन आपको दिया था भगवान ने, बट वो हमने खुद हटा दिया, हमने उसको फाड़ दिया because of AC gases and CFC gases. So point is कि हम और बेटर कर सकते थे, right? मतलब और बेटर कर सकते थे, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बताता हूँ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एवरी टाइम साइंस अच्छा इंटेंशन के साथ ही नहीं बनाया जाता है, और बहुत सारे लोग गलत इंटेंशन के साथ भी होते हैं. और ये मर्चेंट्स ऑफ डाउट करके एक बुक भी है, इन मर्चेंट्स ऑफ डाउट करके एक डॉक्यूमेंट्री भी है नेटफ्लिक्स पे. सो आई एम जस्ट शोइंग यू द ट्रेलर ऑफ इट. यू कैन वॉच इट इन फुल लेटर ऑन. Communication is about sales. Keep it simple. People will fill in the blank with their own, I hate to say biases, but with their own perspective in many cases. The tobacco companies knew nicotine was an addictive drug, yet they told Congress. I believe nicotine is not addictive.
So this is the US president and he's saying nicotine, I think nicotine is not addictive because वो सारी industries ने इसको पैसा दिया and उसको बोलने में कुछ नहीं किया. But after that, because of nicotine, लोगों ने let's say सिगरेट लेना चालू किया. उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों ने अल्कोहल लेना चालू किया और अल्कोहल से एडिक्ट बन गए. तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर में अपने बीवी को या अपने बच्चों को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, उस तरीके की परवरिश नहीं किया, उस तरीके का फैमिली लाइफ नहीं दिया, which they could have given if they would have not fall for this prey. अगर इस बंदे ने नहीं बोला होता या फिर ये लॉ नहीं होता, आज आई थिंक कोई तो कंट्री है शायद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है. न्यूजीलैंड इज कमिटेड दैट फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन smoking is banned for everyone, and we need such governments to do such things to do, because otherwise आप देखोगे कि कोविड में सब कुछ बाद में चालू हुआ, मंदिर सब बाद में चालू हुआ, अल्कोहल की दुकान सबसे पहले चालू हुई. क्यों? क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा टैक्स आता है गवर्नमेंट को. So everyone has their hidden agendas behind it. You see the same small group of people that the tobacco industry used working on all kinds of other issues. Dioxins, pesticides, chemicals in general. I mean, there's no evidence. Did you know कि electric cars almost बन चुकी थी gasoline cars के पहले, but थोड़े कुछ inefficiencies थी, और अगर 5-10 साल उस टाइम पे लग जाते हैं ना, तो आज इतना CO2 गैसेस नहीं होता इस दुनिया में. और जो इतना बड़ा बात करती हैं यूएस और चाइना एंड यूरोप, अगर आप ग्राफ है, I'll just share that graph maybe in the WhatsApp group, you can see that most of the CO2 gases were emitted by this country and India was just 5% or 3% of it. But ठीक है, इंडिया और चाइना कंट्रीज जो कि थोड़े से अभी एडवांस कर रही हैं या अभी डेवलपिंग स्टेज पे, दे आर काइंड ऑफ सेट किया, ठीक है आपके वजह से ये सारा चीज हो रहा है, बट दे हैव डन देयर पार्ट एंड दे हैव मतलब पूरा एक्सप्लॉइट कर लिया, उसके बाद अभी इस तरीके की चीजें हो रही है. That these are harming us. Scientists will explain the science. Against the scientists, they will have a so-called expert. 7-week-old baby was in a crib. I literally heard a gasp when he told the story about this baby. Either one of you paid to testify for your time here in opposition to the bill? Citizens for Fire Safety. Citizens for Fire Safety, the 3 largest makers of flame retardants in the world. On TV occasionally. Okay, hell, more than occasionally. It creates a whole new cast of characters, these people who become well known for casting doubt on global warming. Catastrophic global warming is a hoax. There's no scientific consensus. You go up against a scientist, most of them are very hard to understand and very boring. It's all about preventing you from looking where the action really is, which is in the science. The Earth is getting warmer, no question about it. Bold-faced lie. Basically, you can just watch it and understand कि ठीक है, मतलब there are so many truths which were there, but the scientists have lied to us about, from global warming to tobacco industry to a lot of other things, just because of their hidden agendas or pocket filling. A lot of things were done wrong, and it has been scientifically proven also a lot of things कि nicotine सही है, ये है, वो है. What we are just trying to do here is just to make a rational person के ठीक है यार, scientists भी हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, they can have their hidden agendas, and we should question them rationally also. We should not be a blind follower of science. So हम अगर मंदिर जाते हैं और देखते हैं कि ठीक है यार ये मतलब एक मूर्ति पे कोई दूध क्यों चढ़ा रहा है, तो हम 4 बार क्वेश्चन करते हैं कि यार ये दूध कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है. बट जैसे हम मतलब पीवीआर में जाते हैं, बस बढ़िया से पॉपकॉर्न लेते हैं, 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 रुपए का, और जो मूवी होती है 50 रुपए की भी नहीं होगी, और 500 का टिकट लेके जाते हैं और वी डोंट क्वेश्चन देयर, राइट. बट जब मंदिर जाते हो तो अचानक से आँख खुल जाती है कि ठीक है यार ये पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह, राइट. वी शुड क्वेश्चन, इफ वी आर अ रैशनल पर्सन, वी शुड नॉट जस्ट क्वेश्चन एट वन प्लेस, वी शुड क्वेश्चन ऑन द बोथ साइड, right? And that is what is the takeaway. Okay, so coming back, can scientific advancement help us to put a full stop to all the suffering? So Martin Luther King said, now man can fly like a bird in the sky and swim like a fish under the water using a submarine. But the only problem is he cannot walk on land like a human being because of pollution. So this is the case that we are facing, right? कि हमने जो अच्छा खासा धरती दिया था भगवान ने, उसको ही खराब कर दिया, right? Which we could have prevented on a lot of places.
इंडस्ट्रियल मतलब जब फर्स्ट टाइम गैसोलीन कार बनी थी, राइट, तो उसके पीछे से काला धुआं निकल रहा था, तो तभी भी क्वेश्चन कर सकते थे, राइट, कि काला धुआं क्यों निकल रहा है और ये काला धुआं कितना डेंजरस है। और थोड़ा रुक जाते हैं, अभी बाद में इसको लॉन्च करेंगे जब थोड़ा अच्छा सा एफिशिएंट वर्जन बन सकता है। अभी इतना एफिशिएंट नहीं है बिकॉज ये पोल्यूशन कर सकता है, तो लेट्स नॉट लॉन्च दिस। बट ठीक है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया बिकॉज everyone wanted to make money then and there, because I've invented it and I want to make money and get the royalty and everything as fast as possible, right? So basically a lot of thing, और ये सारी चीजें आपको पता चलेंगे if you read that book Merchants of Doubt. A mountain of 6 million tires, okay, a mountain of 6 million tires, 6 lakh tires, तो इसके बारे में एक वीडियो है, let's see that. Oh, sorry. So basically बोलने का मतलब ये है कि a lot of places the diet which we have, because a lot of things are artificially मतलब आजकल आप देखोगे packaged food and everything है, and जो सब्जियां भी आती हैं from मंडी, that is not perfect. So this is the advancement that we are having. We are having plastic in our like every month we have close to about a hanger का जितना plastic होता है उतना in our belly. And that is why all these diseases are coming up. पहले लोग इतना ज़्यादा क्यों जीते थे 100 साल 110 साल? Because they were not having this artificial things in their diet, or at least the things were very pure back then, right? So this is the advancement that we are having today with science and technology. Because science and technology, देखो science and technology का कोई problem नहीं है, but the capitalism से problem है, right? Because few people just for their hidden agendas, they're just मतलब exploiting the whole population, the 99% of the population otherwise. And science has invented bombs that can only blast living bodies into pieces. They can't we cannot create life, but we are just creating nuclear bombs to Hiroshima Nagasaki के साथ क्या हुआ, all those things, right? So we can create atom bombs, but अभी तक life बनाने का मतलब obviously life we could not create, right? So what are the problems? Old age, white hair, we use a hair dye. Wrinkles के लिए ठीक है, facelift लगा लो आप. बैक पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, कोई डिजीज हो रहा है, यूज अ पेन किलर. ब्रीथलेसनेस हो रही है तो ऑक्सीजन ट्यूब्स. आप देखोगे कि मतलब the very close person in my family also were just kept on ventilator just for the sake of it. Almost they were died, मतलब खत्म हो गए वो छूके थे, but 2-3 दिन का पैसा निकालने के लिए this medicals and medical hospitals and everything, they do that. क्या ठीक है, अभी भी रखते हैं इनको वेंटिलेटर के ऊपर, right? So basically मतलब no one cares about मतलब वो इंसानियत नहीं रह गया अभी काफी सारे जगहों पे. And we are applying superficial patch up solutions which cannot free us from suffering, right? Because painkillers suppress the pain, it does not give you मतलब बस थोड़े देर के लिए पेन को कम कर लेता है, but it does not kill it from the root. As आयुर्वेदा, उसको आयुर्वेदा को थोड़ा टाइम लगता है, but it does the magic for a longer time, and it defeats the disease from the root cause only, right? So but yeah, we need मतलब ठीक है, obviously practically का देखा जाए तो कभी कभी चाहिए होता है, but ideally we should try to go for Ayurvedic medicines and everything also. So we can patch up the problems to fool some people for some time, but reality will be exposed soon. मतलब बाहर से इस तरीके से दिख रहा होता है, but अंदर आप जाके देखोगे तो इस तरीके की reality होती है. There were some things, but I will try to skip because काफी time हो गया, मतलब कुछ और stories बताना था इसके around,
but time is too short. We can patch up the problems to fool people for some time, but the reality will be exposed soon, right? Basically we are trying to प्लास्टिक स्माइल हम जबरदस्ती, अगर आप जाओगे कभी कोई एयरलाइंस पे कोई गया होगा तो हेयर होस्टेस को आपने देखा होगा, जबरदस्ती का वो एक प्लास्टिक स्माइल होता है, बट इंटरनली दैट हैप्पीनेस इज नॉट देयर. बट अगर आप देखोगे कि यार आप जब घर पे जाओगे तो मॉम का जो स्माइल होता है वो एक डिफरेंट स्माइल होता है, दैट इज नॉट आर्टिफिशियल स्माइल, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस पैच अप सॉल्यूशन एंड रियलिटी बेसिकली. Science and technology cannot stop old age, cannot eradicate diseases per se from this earth, hardly has understanding of life and death, because हमें सोल का कॉन्सेप्ट ही हम बिलीव नहीं करते, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है फिर उसके बाद. एंड sorry, yeah. So luxuries and comfort offered by science and technology cannot satisfy the soul. मतलब it's like just गिविंग अ फिश आउट ऑफ वाटर कि ठीक है आप पानी से बाहर लेके आके उसको इंटरनेट दे रहे हो, उसको खाने के लिए दे रहे हो, उसको बढ़िया से पिंजरे में रख रहे हो, उसको सोने का डायमंड का वो बना के दे रहे हो, बट इट विल नेवर 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 बी हैप्पी once that fish is not into the water. So basically we as a soul would never be happy just having this all the luxuries of the world and everything. आप देखोगे कि billionaires are there but they are having divorces. The top 10 billionaires, if you see, most of them are divorced or have a second or third wife. So why is that the case? मतलब perfect होना चाहिए था, इतना सारा पैसा, $1 billion है, right? But things are not perfect because with money and luxuries everything, मतलब सारी चीजें नहीं हो जाती है. That is not a solution to everything. But inner fulfillment, how do you live your life in the best possible way? What are the principles that you should follow? We should all मतलब ये सारी चीजों को apply and understand करना ज़्यादा important है. इसलिए spirituality comes into the play, right? Because whatever we do on a daily basis, we study, we work, we learn a lot of things. We do that just to earn money, right? At the end of the day, but life is more than that. Life has a lot of things more to offer, which we generally don't probably focus on a daily life. And we should this is the time, every Sunday we should come on this sessions and try to understand there are more things in this world to question about and to tinker about and to learn about, but that we generally don't. The soul can only be satisfied with the happy and spiritual world. So basically our scriptures give us an example ki soul, there is this. So basically coming to the solution part, right? कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट जस्ट टू गिव यू अ जस्ट कि जस्ट लाइक वी हैव जैसे कि एक फिश खुश नहीं रह सकता विदाउट वाटर, अ सोल कैनॉट बी हैप्पी विदाउट द सुप्रीम सोल, राइट? एंड दैट इज वेयर द स्क्रिप्चर्स ऑफर्स अ different perspective altogether, which science can never मतलब वहाँ पे reach, because obviously they defeat the existence of soul and super soul and or whatnot, right? But अगर आप देखोगे तो साइंस के हिसाब से हम लोग अभी हमारे गैलेक्सी के बाहर ही नहीं देख सकते, बट अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स और अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम और बहुत सारी चीजें अगर आप कॉस्मोलॉजी के ऊपर पढ़ोगे तो there is this solar system, there is this earth which is there in this solar system, which is there inside this super galaxy, which is there inside this universe, and there are multiple universes like this. हम कभी कॉस्मोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट, बट देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस इन दिस यूनिवर्स, इन दिस क्रिएशन, एंड व्हाट ओनली मटेरियल वर्ल्ड, और उसके बाहर भी देयर इज 3/4 ऑफ द क्रिएशन व्हिच इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट? एंड ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स, and it is said that there is this place, so basically आपने गाना सुना होगा कि आ लेके चलूं एक ऐसी जगह, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले, राइट? सो जहाँ प्यार ही प्यार मिले और जहाँ आंसू भी ना हो ना जहाँ गम भी ना हो, राइट? एंड ऐसा गगन पे मैं लेके चलता हूँ. वो एक्टर तो नहीं लेके जा पाएगा, देवानंद नहीं लेके जा पाएगा, बट इन आवर स्क्रिप्चर्स इट इज मेंशन्ड दैट there is a spiritual world also which is there, where in you can always be happy and there is no miseries or no problems out there. And this whole Vedic scriptures has written just for that purpose, to explain you how do you
go from this place to that place, and in a very scientific and a very logical way. And there are so many different things to understand about, first of all, about yourself, about your destination, where you want to reach. So आप लोगों ने सब सुना होगा कि ठीक है, किसी को जन्नत जाना है, किसी को स्वर्ग जाना है, and everything and all those things, right? But Vedic scriptures offers us more than swarg. Swarg is just in this material world, but there are some things which is beyond swarg and beyond a lot of things. So हम जब cosmology discuss करेंगे तब हम कभी discuss कर सकते हैं इसके ऊपर. Probably in the next two sessions, and दो session के बाद हम kind of probably will discuss about it, where you'll understand more in depth about the spiritual world and everything. But just for now, understand that there is a world, according to our scriptures, which is said that where there is no no pain or no suffering, and there is happiness all throughout. There is no existence of time there. मतलब time का concept ही exist नहीं करता है वहाँ पे. It is eternity all time, right? So all those things we can discuss. But थोड़ा क्योंकि इसके ऊपर scientifically और अच्छे से discuss करना पड़ेगा. So I'll not rush it into it, but I'm just giving you a broader perspective and a thing about it. So the soul can only be satisfied and happy in the spiritual world. So this is the spiritual world which I just talked about, which is the natural home, just as fish will naturally be happy when we put back into the water. I'll just skip this story because there is no time. Lesson from the dissolute land. So basically ये land ऐसा था कि जहाँ पे आपको basically short में ये देखो कि एक land पे एक बंदा पहुंच जाता है गलती से, और उसको पूरे दिखते हैं कि ये सारे आदिवासी हैं. तो आदिवासी उनको बोलते हैं ओ वी गॉट आवर किंग. तो मतलब उसको लगा था कि मेरे को मार देंगे, बट दे आर सेइंग क्या ठीक है, आपको मैं किंग एक साल के लिए रखूं, मतलब गॉड सेंड अस ऑन 31st of December एवरी टाइम. एक बंदे को भेजते हैं जहाँ पे आप आ जाए हो तो यू विल बी किंग फॉर द नेक्स्ट 1 year फॉर दिस होल लैंड. एंड तो उसने बोला कि ठीक है, मेरे पहले भी कोई किंग था क्या? तो उन्होंने बोला हाँ वो किंग था, उसको हम लोग फिर एक डेसोल्यूट लैंड पे डाल देते हैं, राइट? और सो बेसिकली बोलने का मतलब ये था कि और फिर वो बंदा ने क्या किया कि ठीक है, उस डेसोल्यूट लैंड पे धीरे धीरे करके गोल्ड कॉइन्स एंड डिफरेंट चीजें भेजने लगा, so that he can be happy there. So he's just trying to make arrangements for him. So that is how we are also trying to we'll be ठीक है, हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, बट I'll just skip this part. मेरे को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, बट ठीक है. So the wise has firm faith in God. The foolish has no faith in God. The wise lives life according to the laws of God. The foolish eat, drinks and be merry. मतलब उनकी philosophy जो spirituality and all these things, they don't believe. It's just like it, यार, life is just once, and do whatever you want, no matter what. बस मजे करो और ऐश करो. That is the philosophy. But that is not the philosophy of a true intelligent person, right? He thinks क्या ठीक है, अगर ट्रैफिक का लॉज है तो ट्रैफिक का लॉज जस्ट पर्सन जिसको नहीं भी पता होगा उस लॉज के बारे में, तो भी उसको ट्रैफिक के लॉज लगेंगे. मतलब उसको पुलिस मतलब ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा. अगर आपको पता है कि रेड लाइट पे आगे जाना है नहीं जाना है, फिर भी आपको ट्रैफिक वाला पुलिस वाला पकड़ेगा. तो सिमिलरली अगर आपको लॉस पता है या नहीं पता है, अगर आप उसको करोगे, अगर आप उसको तोड़ोगे, दैट लॉ विल बी एप्लीकेबल टू यू, राइट? एंड द वाइज रिमेंबर्स, एंड दैट इज व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड कि यार कुछ लॉज हैं जो हम नहीं भी जानते हैं, बट दोज लॉज एग्जिस्ट, एंड अगर वो स्क्रिप्चर्स में दिया गया है तो वो होगा. मतलब आप मानो या ना मानो, मतलब आपके ना मानने या मानने से दैट वोंट चेंज, राइट? And remembers the temporary nature of this world. The wise remembers the temporary nature. This world is a temporary world, and you have to die after 60 to 100 years, right? And then you will get the next life and everything according to the last thought that you have. The foolish forgets the temporary nature of this world and enjoys sinfully for not caring for the future. So the wise follows a regulated life with the principles which are ultimately attained by God, but the foolish, envious of others, lives an unregulated life and goes to hell, right? So basically the life, the journey of life is kind of compared to the train of a journey. कि ठीक है, आप देखोगे कि आपने जर्नी स्टार्ट की, लेट्स से फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली,
और आप देखोगे कि ठीक है आपके साथ कुछ लोग थे और वो कुछ लोग ऑन द वे कुछ लोग उतर जाते हैं, राइट? तो एक बंदा गया, फिर दूसरा बंदा गया, राइट? तो इस तरीके से जर्नी ऑफ लाइफ आप देखोगे कि ठीक है इट्स जस्ट मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम बट अ बिगर ड्रीम, राइट? एंड मतलब थोड़ा बड़ा ड्रीम है, बट अगर आप सोल एज इट इज सेड इन भगवद गीता दैट देहिनोस्मिन् निधादे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरस्य प्राप्ते धीरस् तत्र न मुह्यति, व्हिच मींस कि यू जस्ट चेंज योर बॉडी चेंज करते हो बट द सोल रिमेन्स द सेम एंड द सोल इज फ्रॉम इटर्निटी। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है आई वाज देयर फ्रॉम इटर्नल टाइम अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स और भगवद गीता, and this life which I've gotten, let's say as whatever name I have, right, let's say as Sujal or Nitin or anything, this is just for this 100 years. अगर आप eternity से compare करोगे, infinity से compare करोगे 100 years, तो that is so small, that is negligible, right? So hundreds and thousands of living entities meet at death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and not prepared for death. This is the most wonderful thing in this world. तो ये जो श्लोका में लिखा है वो हमें इस एग्जांपल से समझते हैं। I'll just एंड यहाँ पे उसके सामने लोग एंड उसको दिख रहा है कि अब नेक्स्ट ठीक है यार अभी मेरा नेक्स्ट टर्न है। मतलब हम सामने देखते हैं कि यार लोगों की डेथ हो रही है, लोगों को डिजीजेस आ रहे हैं, लोग इतने सारे कोविड में इतने सारे डेथ हुए, कुछ यंग लोगों के भी हुए जो मतलब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन, कुछ लोगों के एक्सीडेंट में हो जाते हैं, राइट? बट वी डोंट थिंक यार हमारा कभी होगा, मतलब हमें लगता है कि ठीक है वो कभी एक दिन आएगा, जब होगा तो होगा, देखा जाएगा। बट जिसका कोविड में हुआ या लेट्स से किसी का एक्सीडेंट हुआ, दैट पर्सन वाज आल्सो नॉट थॉट कि यार आज मेरा डेथ होने वाला है, राइट? So we are just like this goat. We are just seeing, realities in this world. We understand that there is this death concept which is existing, but we just never question about it. कि यार ठीक है death है तो फिर death के लिए मैं कैसे prepare करूँ, right? And spirituality is all about that. How do you prepare yourself for that things? And मतलब more than that, but just मतलब that spirituality offers, but science doesn't offer you that, because ठीक है science का ये कि ठीक है death के बाद सब खत्म हो जाता है। But spirituality says कि ठीक है there is this eternal bank balance which is even after this life, which is not just for this life but life after life. That is what spirituality gives you, कि the soul is eternal and the karmas that you carry is eternal. That doesn't change as per this body, कि मतलब इस life के लिए नहीं रहेगा बस, it would carry on forward for the next life also. अगर लेट्स सपोज हम इस क्यू में रहेंगे जहाँ पे नेक्स्ट बंदा जो है वो जाके उसको काट रहा है, हम इस क्यू से भाग जाएंगे, राइट? वी वोंट बी लाइक दिस गोट्स, बट फॉर लाइफ और फॉर डेथ, इवन आफ्टर नोइंग दैट बहुत जल्दी नेक्स्ट 20-30 साल, और 20-30 साल ऐसे चले जाता है, नेक्स्ट 20-30 साल, या फिर किसी को पता भी नहीं कि 20-30 साल रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, पहली बात तो, क्योंकि डेथ कैन कम एट एनी टाइम बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न विद अ ड्यू डेट, राइट? So at the end of the day, when will our turn come? We don't know that. So we should be well prepared before that. उस दिन का वेट नहीं करना है कि ठीक है मेरा टर्न कब आएगा, और उस टाइम पे लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन नहीं करना है इंजीनियरिंग की तरह कि ठीक है लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रिपेयर कर लेता है, राइट? वी शुड नॉट बी लाइक दैट पर्सन, बट रादर लाइफ के साथ साथ अपनी ड्यूटीज करते के साथ साथ वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, डेथ, स्पिरिट, सोल, about spirituality. How do I prepare myself for that other world which we talked about? How do I go there? What is this world? What is that world all about? What is the process for going to that world? और ये सारी चीजें होती क्या है, मतलब थोड़ा सा और समझना, मतलब at least that we can do at our level on a daily basis or on a weekly basis at least, right? Reading some books, coming to such sessions, or talking and discussing with people who are having an understanding about all these things already, who have read some scriptures and everything, or you yourself going and understanding scriptures, right? So we should do all these things to तो हम लोग और थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा फास्ट जाता हूँ मैं भी। So yeah, permanent solution from the Vedic perspective is, why am I suffering? We should question this in the first place. जैसे हमने गौतम बुद्ध का एग्जांपल लिया,
right? He questioned, why am I suffering? And then he got the enlightenment. So we should also have this question, if there are so many problems, life, like old age, birth, disease, and death, and all these things happens, and there is Adi Bhautik Kalesh, Adi Devik Kalesh, Adhyatmik Kalesh, and this is going to happen no matter what, but होते ही रहेगा, मतलब आप कुछ भी करके रोक नहीं सकते हो उसको, right? Then why am I suffering actually? मतलब क्यों सफर कर रहा हूँ मैं? That is a topic for a different day. हम लोग वो भी discuss कर सकते हैं. But why am I suffering? We should understand, and we should also understand what is the goal of life actually, right? कि ठीक है, ये सारी suffering है. अब how do I, overcome this suffering for permanently? And we should question about these things, and spirituality will give you answer. और देखो एक दिन में answer नहीं मिलेगा. You have to come to the sessions regularly. You have to read books. You have to attend sessions. You have to associate with people who have at least some clarity around that part, and try to understand and question them. कि ठीक है, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है? And then probably you'll understand at one point of time, right? So I'll just skip a lot of things here because अभी time नहीं है. So right, so material problems, spiritual solutions. So आप देखोगे कि what you'll ask कि यार ठीक है, क्या एक practical example आप दे सकते हो जो भी आप ये सब सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो? So I'll say yes. अगर आप देखोगे Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON, right? He went to USA, and there people were, hippies basically. Hippies का मतलब होता है कि ठीक है यार, वो बंदे जो कि उन्होंने, they have done illicit sex with all the different women. They have all the wealth because Amir बाप के बेटे हैं, right? And they have good degrees in their hands, right? But even after that, they are not happy. Just like Shah Rukh Khan's kid, they are still not happy. And then they were looking happiness in LSDs and drugs and everything, right? And then Prabhupada, Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON, and Bhagavad Gita as it is, which is the book which is transforming so many people's life out there, in Russia to China to Singapore to Australia to everywhere. And this is the most widely read Bhagavad Gita, which is available in 800 plus languages, even in Arabic, even in Persian, even in Russian, everywhere. So this Bhagavad Gita, when people read and when people apply in their life, they see a very different transformation. These are the foreign people who are from Christianity or Judaism or Islamism or everything. But once they are applying that principles which are taught in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, their lives have changed. The hippies which we are talking about, the hippies became happy, and they become people जो कि celibate हो गए, मतलब they became brahmacharis even. मतलब some of them, not all of them obviously, but a few handful of them become brahmacharis also. जो लोग इस सारी चीजों में थे, पूरी गलत एक्टिविटीज में थे, और they were at the pinnacle of what is considered to be on the downside. उसके बाद भी they become on the pinnacle of what is considered to be on the right side. They become from hippies, they become to brahmacharis, and then sannyasis even. Some of them became. So that is the transformation which is possible, and this is possible just even in one life. Matlab Prabhupada was there for 5 years, 10 years. He was there in this world when he went to New York. After that, he was there for 11 years or so. And in that time, he created about 50,000 devotees all across India, all across the world. All across the world, he created 50,000 plus devotees. Out of them, so many were brahmacharis. He created so many gurukuls. He created farm communities, so and whatnot. Because, and this shows that in 10 years, if so much is possible, what is possible in 100 years or 1,000 years? And if you apply this life, मतलब अब ये समझो कि ये सारे लोग वो लोग थे जो कि they were Christians and they were not understanding it. ठीक है, कृष्णा कौन है या राम कौन है या फिर all they don't know about the scriptures and nothing they have. But scriptures are there with us, and it's like कि वो अगर आप देखोगे कि why did Steve Jobs came to India? Why did Mark Zuckerberg came to India? They all came to India for search of spirituality, something higher, something different. And there are a lot of people such like that who have accumulated a lot of wealth, and then they discover कि ठीक है, something higher is there, and let me search for that. And उसके बाद लोग यहाँ पे आते हैं, उस point पे आते हैं. So why not
आफ्टर मतलब एक पॉइंट के बाद आने के बाद करें या फिर अभी से कर लें उसको, और थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार 2-3 दिन 2-3 घंटा लगा के वी ट्राई टू practice some spirituality in some or the other form. Understand first of all कि spirituality होता क्या है logically and scientifically, and come here and question multiple times. It is not मतलब basically spiritual का मतलब ही होता है कि spirit behind the ritual. You should understand the spirit behind the ritual, and if you don't understand it, you are just following it sentimentally. Blind faith बोलते हैं उसको, तो blind faith नहीं करना है किसी के ऊपर. You should have a rational faith. मतलब you should understand logically and scientifically यार कि क्यों ये होता क्यों है. Let's say if I need to meditate, why do I meditate? अगर आप देखोगे कि and there are good examples like Calm app, or there are good examples Omvi का करके एक ऐप है, and there are so many good $billion मतलब कंपनीज हैं. अगर आप काम ऐप के बारे में देखोगे, हेडस्पेस के बारे में देखोगे, these are $billion companies which are existing today and which have been created in Silicon Valley, not in India, because we don't believe in meditation. And but people who are there in Silicon Valley, who are stressed, who are suffering, मतलब who are in the pinnacle of their life, who have done all the advancement in the world which India is trying to do, और हम on the way हैं, उन लोगों ने करने के बाद अभी इंडिया का जो मेडिटेशन है that they are doing, and that industry is a $1 billion company. अगर आप हेडस्पेस और हेडस्पेस, माइंड वैली और ये काम ऐप के बारे में सर्च करोगे, it's a $1 billion industry out there. But in India, घर की मुर्गी दाल बराबर, and we don't have that thing कि यार ठीक है हमें करना है, हमें फॉलो करना है, हमें सोचना है इसके बारे में, because we have that inferiority complex within us, right? So और भी चीजें डिस्कस करेंगे. I'll just go fast, मतलब otherwise बहुत टाइम हो जाएगा. What is the goal of life? So वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीरानि विहा जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि. Right? Bhagavad Gita 2.22. It says that you are the soul. Your body is just like a shirt. As a person puts on new dress, giving up the old ones, the soul similarly accepts new body, giving up the old and useless ones. Right? So ये चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था फर्स्ट वाले सेशन में, तो आप लोग वो देख सकते हो इफ यू हैव मिस्ड इट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, the soul leaves the gross body behind and it is taken to another womb based on the quality of desires. And हमने reincarnation के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. साइंटिफिकली वी हैव सॉन कि 40,000 केस स्टडीज है बाय आयन स्टेफेंसन अलोन, और ऐसे बहुत सारे और रिसर्चर्स हैं, केस स्टडीज हैं, और बहुत सारे proofs है around reincarnation, near death experiences, open body, out of body experiences and everything, right? So वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. बट द क्रक्स इज कि what happens after that, the soul leaves this gross body. Let's say for me, the soul will leave my body and take another body, which body I will desire about at the time of the death. So there is this shloka in Bhagavad Gita which is called as Antakalecha mameva swaran mukta kalevaram, right? Which means कि यार ठीक है, the law of the attitude that, or the thought you will have at the end of the life, that type of person you will become, right? Just as so just like a person moves from one vehicle to another, so you can sit on a bicycle, you can sit on a bike, you can sit on a car or an airplane. It is just changing body. The soul remains the same, the person inside remains the same. Similarly, the soul never dies, but the body changes, right? And body कैसे change होता है, that is mentioned in the Bhagavad Gita. The spirit moves from another body to another. ठीक है, ये हो गया. On what basis? यम यम अपि स्वरम भावम त्यजाति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता. Bhagavad Gita 8.6. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. So whatever consciousness or whatever thought you will have at the end of the time when you are leaving this body, and at that time हमने जैसे डिस्कस किया कि a lakh scorpions bite उतना पेन होता है, तो उस टाइम पे आप जो चीज याद करोगे वो चीज के हिसाब से आपको नेक्स्ट लाइफ मिलेगा. अगर आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सोच लिया तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिलेगा. अगर आपने लेट्स से यू थॉट अबाउट एक्ट्रेस, मे बी यू विल बिकम समथिंग लाइक दैट, राइट? अगर आपने कोई मतलब यू वांट टू बिकम, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं भगवद गीता में,
We accept one body after quitting depending on desires in the mind and good and bad karmas. तो ये दो factors के ऊपर depend करता है. One is कि क्या desire होता है at the end of the day, at the time of the death, and how much good and bad karmas do you have, because every action has an equal and opposite reaction, and the laws of karma work whether you believe it or not, right? So the laws of karma, as you sow, so shall you reap. Every action has an equal and opposite reaction. Third law of Newtonian motion also. So karma has types of reaction: instant और delayed. मतलब आपको तुरंत मिलेगा या तो थोड़ी देर के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर. मे बी आपने कुछ गलत काम किया, उसका रिजल्ट आपको अभी तुरंत के तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जरूर मिलेगा, राइट? मे बी 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर. किसी किसी चीज का आपको 1 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगा कुछ इंस्टेंट. आपको लगेगा यार ये मैंने गलत किया था, इसकी वजह से ये हो गया. तो इफ यू प्रैक्टिकली ऑब्जर्व इन योर लाइफ, यू विल सी ऑन. आप देखो ना कि how can you understand laws of karma really exist? What is the answer to, let's say, a person who, or a baby who is born not so good, let's say born blind, or let's say born with मतलब not a good legs, मतलब जिससे वो चल नहीं सकता, या फिर हाथ नहीं अच्छे होते हैं किसी किसी के, राइट? किसी किसी का बॉडी एकदम वीक होता है, किसी किसी को मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम द बर्थ ओनली. मतलब why is that the case? ऐसा क्यों है पॉसिबल? ऐसा क्यों पॉसिबल है कि यार कोई बंदा अंबानी के घर में पैदा होता है और कोई बंदा मतलब एक स्लम में पैदा होगा? Who decides that? How is that the case? It's all decided on the basis of karma, and laws of karma exist whether you believe it or not. As हमने डिस्कस किया कि अगर आप रेड लाइट पे जाओगे तो आपको पुलिस चलान काटेगा. आपको पता था कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन चलान काटेगा, right? That is how the laws of karma work, whether you believe it or not, right? हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में कभी laws of karma के बारे में, but this was the short form. In human form life, we have got developed intelligence to discriminate and lead responsible lives. But if one engages in sinful activities of the following, so these are the 4 activities of sinful life, right? Which are meat eating, intoxication, gambling. So basically हम लोग अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मे बी नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया. I'll just try to wrap up. Meat eating, मतलब which is not good. This is one of the pillars of sinful life. Then there is intoxication, which is also not good and not mentioned in our Vedas to do. Whether it is drugs, whether it is smoking, whether it is pan masala and everything. Whether it is gambling, because gambling अगर आप करोगे तो आपका state of mind सही नहीं रहता, and then you cannot follow spirituality because you are always in that कि यार अभी मेरा पैसा चले जाएगा and everything, right? And illicit sex, not having sex with other than your wife, anyone else, right? Or watching porn for that matter also. So these are all mentioned in a scripture that you should not do. And when one ignores God's law and engages in sinful activities, then one glides down from animal bodies, repeated birth and death. And then, so basically आप देखोगे कि जैसा जैसा उसने सोचा उस तरीके से, अगर कोई मीट ईटिंग बहुत अच्छा लगता है तो he'll become a tiger at the end, after maybe in the next life. If someone wants to sleep और उसको सोना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा सोना पसंद है, तो he'll become a polar bear maybe in the next life. If someone wants to see wrong magazines or porn and everything, so और उसको वो ऐसा चीजें देखना पसंद है या वही consciousness बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, he'll become a tree in the next life because tree doesn't have clothes, right? So basically, as per your karmas and as per the last thought of your death, at the time of your death, you will get the next body. And if we obey God's laws and the principles of austerity, sacrifice, knowledge, मतलब austerity मतलब हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, कुछ चीजें अच्छी करते हैं, कुछ चीजें sacrifice करते हैं हमारी लाइफ में for the good things. And we understand this knowledge from Ramayana, Bhagavad Gita, Bible, Vedas, Mahabharata, Puran, and associate with saints, right? Good saints. If you associate with, then we can attain the supreme destination, which has no death,
no old age, no disease and no birth. और अगर हम अच्छे मतलब बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि अगर हम अच्छे कर्मास करेंगे और अगर हम अच्छा कॉन्शियसनेस रखेंगे थ्रू आउट आवर लाइफ एंड अच्छा कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द लाइफ रखेंगे तब डेथ कभी भी आ सकता है. तो उस टाइम में भी अगर आपका अच्छा कॉन्शियसनेस होगा and you'll have a good consciousness to go back to spiritual world and about God and everything, so you will get that kind of a next body. That is the whole philosophy. So if you obey God's laws and follow the ABCD formula: association, books, meditation, chanting, diet and engagement, seva. So what is this? हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे sometime next. But association मतलब associating with people who are like-minded people, who are having spirituality का understanding है जिनको, या फिर जो समझते हैं क्या वेदास क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं. How do you apply these things in your life? And if you regularly associate with such people, you will be transformed. जैसे कि प्रभुपाद जब गए US में तो he transformed hippies who were of that low graded quality to this people which you see in the back. ये लोग ब्रह्मचारीज या सन्यासीज बन गए और ये लोग सारे लोग वैसे ही लोग थे जो हिपीज थे बेसिकली. एंड नाउ दे आर ट्रांसफॉर्म विद धोती कुर्ता, तिलक, meditating and everything, right? If you and you should read books also, which you must try to read books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. You should also try to meditate and chant. अगर आप देखोगे every religion में you have some or the other way to chant God's name, and having good sattvic food, not having meat or not having other foods, that is prescribed, and having good engagement मतलब कुछ service, because at the end of the day you are serving maybe your boss at your company or your family में आप किसी को serve कर रहे हो. At the end of the day you are serving some or the other way. किसी ना किसी तरीके से आप किसी ना किसी को serve कर ही रहे हो. So why not to serve the supreme person who is the creator of this whole universe, right? So that is the whole philosophy. I'll just take questions because बहुत सारी चीजें हो गई, we have crossed a lot of time. The man who has escaped these 3 gates of hell: lust, greed, anger and greed, O son of Kunti, performs acts conducive to the self-realization and thus gradually attains the supreme destination. He'll come to me. That is written in Bhagavad Gita 16.22. Mam upetya punarjanma dukhalyam shashvatam. So basically this world is called as material world. This world is called as a place of misery, and यहाँ पे miseries हो गई. But there is a spiritual world which is said in the Bhagavad Gita. After attaining me, the great souls who are the yogis in devotion never return to this temporary world, which is this world, material world, which we call as material world. And there is the spiritual world. God says he'll attain me, which is full of, this temporary world is full of miseries because they have attained the highest perfection. So basically, jo log, after attaining me, the great soul who are yogis in devotion. So jo devotion mein rahenge, they will attain me. And they will, those who are not in devotion, they will be full of miseries in this world. That is the conclusion of chapter 8, verse number 15, Bhagavad Gita. So in summary, हमने क्या discuss किया? I'll just try to summarize. तो हमने 4 problems discuss किए: birth, old age, disease, and death. We also discussed some of the things related to threefold miseries like Adhyatmic Kalesh, Adi Bhautik Kalesh, Adi Devik Kalesh. Then we discussed कि यार scientific solutions जो हैं वो सब patch up solutions हैं. And we don't really have the clue about the goal of life और कहाँ जा रहे हैं हम लोग actually में हमें नहीं पता actual में. And some people, the 0.01% people are just gaining money and exploiting the other 99%. That is happening through capitalism and everything. Then we understood the soul is equals to fish out of water and cannot be satisfied by temporary solution. He needs to go where he actually belongs. The soul actually belongs to the spiritual world. And when he goes to the spiritual world, then only he'll be happy. That is the philosophy of Bhagavad Gita. And Desolate Island story हमने देखा, और फिर हमने देखा कि the wise and the wise versus the foolish क्या difference होता है. And Vedic wisdom हमने देखा कि ठीक है, there is a permanent solution. पहले हमने concept समझा, transmigration of soul होता है, laws of dharmas होता है, either instant होता है या तो delayed होता है. There are some sinful activities which we should not do. Those are 4 things: intoxication, gambling, meat eating, and illicit sex. This we should avoid. And if you avoid that, आपको laws of karma, you will be having good karmas. And if you have good karmas and if you have maintained a good consciousness at the end of the life, then
and you follow God's laws, and then you will attain supreme destination, which is the spiritual world. So इसके ऊपर अभी काफी सारी चीजें होंगी क्योंकि ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट था ऑल टुगेदर आप लोगों के लिए, काफी सारे लोगों के लिए. तो आई ट्राई टू शेयर बिकॉज कम टाइम में आई कैन नॉट शेयर इन डिटेल. So if you have any questions, I'm here. We can discuss it out. And आपको कोई भी challenge है, कोई भी चीज़ है, आपको कोई चीज़ सही नहीं लगी, गलत लगी या कोई भी चीज़ है, we can have a discussion and we'll try to make you understand why is that the case. Because I've been reading this from the last 5 years and 6 years, and I've tried to understand a lot of things, and I have scientifically come to a conclusion that a lot of things which I've read in the scriptures and I've applied in the life, and then I've seen positive transformation. And I have seen कि यार काफी सारी चीजें make sense करती है, and it makes sense more than other things, other philosophies that we have. So at least we should try to understand these things. At least आज के सेशन से कुछ नहीं मिला हो तो ये होना चाहिए कि ठीक है, I should try to question whatever is there in the world with a rational way, and then try to understand the spirituality. ये सारी चीजें होती क्या है, और मैंने आपको एक जिस्ट में समम बोनम दे दिया, but there are a lot of details which is yet to be discovered and yet to be discussed, or you can read it out. I can recommend you books, or we can discuss it out in form of question and answers. काफी सारी चीजें, because आप ये समझो कि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए इतना टाइम लगा दिया कि आपको पहले 11th-12th पढ़ना पड़ा, पूरा बेसिक्स क्लियर करना पड़ा, उसके बाद आपने पूरा इंजीनियरिंग किया, everything. How would you understand spirituality which is so beyond and so deep in just one day or two? It would require time, right? And it would require good amount of patience and time to understand all these things. But at least you should be a rational person asking questions and trying to understand it. That is the important part. At least you should try to understand it and make an attempt to understand things. Okay, so I'll wind it up here. Thank you so much, everyone. I think we were about 2.5 hours. So I think काफी time ले लिया हमने आज. But I think you stayed nicely for the whole time. Thank you, everyone. सबके कैमरास बंद हो गया, एक बार कैमरा ऑन कर लो. ठीक है, तो आई थिंक कुछ लोग भगवान बोलते हैं कि मतलब only few souls can understand this truth, and it is difficult, मतलब because this is a difficult science, because काफी सारी चीजें होती हैं ना, और ये क्या होता है कि पूरे मीडिया के अपोज्ड है, राइट? whatever we have seen till now and whatever we have understood till now, it is just a lot of things are very beyond that. So थोड़ा नया होगा, कुछ अलग होगा. तो I think कि ये सारी चीजें important क्यों है essentially, right? These things are more important also because कि हाँ, so these things are more important also because कि आप देखोगे कि अगर वर्ल्ड में अगर लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए ना, और लोगों का इस सब का अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ठीक है मैं कुछ बुरा करूंगा तो मेरे को रिएक्शंस मिलेगा. आप ये देखोगे कि कितना, मतलब आप ये देखोगे यार लॉ एंड ऑर्डर क्यों होता है. अगर प्रिजन हाउसेस नहीं होंगे तो ये वर्ल्ड में कैसे चलेगा? मतलब व्हाट डू यू थिंक how this world would look like if there are no prison houses? आप पहले देखो कि पहले सब लोग लड़ाई करते थे, राजा महाराजा इधर उधर, और इतना कुछ एक वेल स्ट्रक्चर नहीं होता था. लोग किसी को कुछ भी मार रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब ठीक है. तो बिकॉज देयर वाज नॉट अ स्टेट स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट्स और ये सब कुछ भी नहीं था, राइट? और जेल नहीं था, कुछ नहीं था. तो मतलब बढ़िया से, मतलब जेल होगा लेकिन वो दैट इज सब्जेक्टिव टू दैट पर्टिकुलर किंगडम ओनली. बट आप ये देखो कि अगर किसी को एक अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी का, एंड इफ आई माय कर्मास गोज विथ मी एंड एवरीथिंग, इट वुड बी so मतलब so relatable कि यार मतलब this world would be a very different place altogether, because लोग इंसान सोचेंगे कोई भी चीज करने से पहले, और अगर सारे इंसान वैसे सोचने लगे तो काफी डिफरेंट होगा ये प्लेस, राइट? बिकॉज आजकल क्या हो रहा है ना कि यू ओनली लिव वंस वाला एटीट्यूड है, and you only live once while attitude hai, that is why terrorists are doing suicidal bombings, or let's say some people are not paying attention to a lot of things, and लोगों को लगता है कि ठीक है यार मैं इसका बुरा करूंगा तो मेरा क्या ही होने वाला है. And that is why all the politicians are getting corrupt, all the people on the top of leadership are getting corrupt, because they don't have that spirituality in them. आप देखोगे मोदी, why is he so good? Because he understands a lot of things. He is a spiritual person. He goes on spiritual trips. आप देखोगे तो he goes to Kashi Vishwanath, he goes here and there.
तो ही इज स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड किया, ठीक है मैं किसी का बुरा करूंगा तो मेरे को कुछ लगेगा, और अगर टॉप लीडरशिप ऐसा सोचेगा तब जाके डिफरेंस मेकिंग होगा। अदरवाइज अगर सब बंदे अपना अपना सोचने लगेंगे ना, देयर वोंट बी डिफरेंस इन दिस सोसाइटी। एवरीवन मतलब अगर सारे लोग सेल्फिश हो जाएंगे तो खत्म है फिर तो, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल दिस, मतलब मैं बोलूँ कि ठीक है चलो लाइफ के बाद किसने देखा है, बट इस लाइफ में भी अगर आप देखोगे, अगर स्पिरिचुअलिटी इफ यू फॉलो ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज एंड ड्रास्टिकली। अगर आप देखोगे कि काफी सारे जो प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करते हैं, it could be solved in this life only. मतलब if people become spiritual because they follow good practices, they become good people, they don't want to harm others. तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें होंगी जो आप ऑटोमेटिकली इनकलकेट कर लोगे if you're a spiritual person. But if you have that philosophy in mind कि ठीक है यार कल किसने देखा है, इसी लाइफ में जीना है, किसने देखा ये कर्मा लगता है नहीं लगता है वगैरह वगैरह, then you automatically don't have anyone to talk, मतलब कोई है ही नहीं ना फिर तो, मतलब माई बाप, मतलब फिर आप कुछ भी करोगे मतलब कोई आपको रोकने वाला है नहीं, because you don't think कि यार repercussion है किसी चीज का। And that is why all these things are happening in this world, and that is why people kill so many people and they don't feel bad, and that is why cases like जो अभी हुआ था, जिसको इतने सारे टुकड़ों में काट दिया, अगर उसको पता होता कि लॉज ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता है, क्या वो काटता इतने सारे टुकड़ों में? अगर उसको ये कन्विक्शन होता है इस चीज के ऊपर, मतलब रूट कॉज है बेसिकली, आप समझो, अगर स्पिरिचुअलिटी आप समझ लो ना, काफी सारे प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड खत्म है। तो मतलब इट्स अ वेरी डीपर थिंग, मतलब थोड़ा रिफ्लेक्ट करना आज के बाद, बहुत ज्यादा हो गया, 3 घंटा हो गया आई थिंक 3 नहीं 2 घंटा हुआ ना, 2 घंटा हो गया। तो आई थिंक बट यू शुड रिफ्लेक्ट राइट कि व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट। और ठीक है कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस लेके आओ, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम बस क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस ऑल द थिंग्स इन समराइज्ड वे, क्योंकि हमने थोड़ा फास्ट किया आज, काफी सारी चीजें मेरे को स्किप करनी पड़ी बिकॉज टाइम नहीं था। और वी कैन हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं मे बी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस, और आपने 2 घंटा सुना। I hope you could gain something from this. Thank you.